Hello students, welcome to all these scholar classes. So today I will be taking up a topic from class 9 science. Chapter number 2 is matter around us pure. Okay, so in the chapter first we have already discussed about what is matter. You can go and see my video about matter. Okay, in the first part of the chapter this was there. So today we will be studying is matter around us pure. So what we got to know that what is matter? Matter is anything that occupies space and has weight. Okay? कोई भी ऐसी चीज जो कि आप इसको ये चौक है, it is also a matter. आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इतना सा स्पेस इसने लिया और इसके पास कुछ तो वेट है. Okay, so that is matter. But today the main concentration will be is matter around us pure. वो कौन सी criteria है? What are the criteria on which we can decide that whether a particular matter is pure or not? What is the criteria of purity? Purity किस पे depend करता है? कोई भी matter कितना pure है ये हम कैसे कह सकते हैं? Okay? So today we will be seeing this that whether a matter around us is pure or not. So before starting the chapter, there are few things which should be very clear to you. The first thing is substance. Okay? So the question is, what is substance? If we talk about substance, so anything that cannot be broken into further particles by applying any physical process is called as substance. Substance क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसको कि आप further break नहीं कर सकते हो और small particles में किसी भी outside force से या किसी भी physical process, कोई भी physical process हो उसको हम बोलेंगे substance. ओके तो अब सब्सटेंस को हम डिवाइड करें तो जो है कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. ओके मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. सो व्हिच आर दे? वन इज द प्योर सब्सटेंस. ओके एंड द अदर वन इज द इम्प्योर सब्सटेंस. Okay, so impure substance, what is that? As the name itself suggests, impure. Impure का क्या मतलब है? आपसे कोई पूछेगा कि ये particular चीज is impure, then what you mean? It means that there is some mixture, कुछ मिलावट है उसमें. तो impure substance को हम क्या कहते हैं? It is called as mixture. Okay, अगर layman की language में pure और impure की बात करें तो हमें क्या पता है? Pure और इम्प्योर मीन्स कि वो शुद्ध नहीं है, कुछ मिक्सचर है, कुछ मिलावट है उसमें. ओके या अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें प्योर की तो वी कैन सी दैट समथिंग व्हिच डू नॉट हैव एनी एडिल्ट्रेशन. ओके दैट इज प्योर. बट इफ वी टॉक अबाउट व्हाट साइंस सेज फॉर प्योरिटी, व्हाट साइंटिस्ट से ऑफ प्योरिटी, इट इज समथिंग एल्स that we are going to study today. Okay, according to science, according to scientists, what is purity? Okay, अब हमारे लिए क्या है? When we go in a market, suppose we buy milk. For us, milk कौन सा milk pure है? अपने मम्मा से आप पूछोगे, जो ask the mother which milk is pure, she will say the one which do not have water. जिसमें पानी नहीं मिला है वो milk मदर के लिए प्योर है या हम सबके लिए वो मिल्क प्योर है. अगर हम हनी खरीदते हैं मार्केट से, हनी की बात करें तो वो हनी जिसमें शुगर नहीं मिला, जो हनी डायरेक्ट हनी बी से एक्सट्रैक्ट हुआ है, वो वाला हनी हमारे लिए प्योर है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, चीज है एक्सेट्रा. तो प्योरिटी इन टर्म्स ऑफ आवर लैंग्वेज इज समथिंग एल्स, बट एक्चुअली प्योर, व्हाट इज प्योरिटी, व्हाट साइंटिस्ट थिंक्स about purity
कर सकते हैं. Okay, it's not like the way we think. Okay, so let's see what is a pure substance. What is a pure substance? So if we talk about a pure substance, it is a substance is pure when it is made up of one type of particle. Okay, a pure substance consists of a single type of particles. Okay, or you can say that pure substance is that constitute particles of that substance are in the same chemical nature. Okay, प्योर सब्सटेंस क्या है? इनके जो पार्टिकल्स हैं या तो वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल का बना हो, ओके, या अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स का भी बना हो, तो जो केमिकल नेचर है पार्टिकल्स का, केमिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स should be same. Chemical nature of particles should be of same type. Okay? तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये pure substance है. Okay? So pure substance, pure means that all the constituent particles of that particular substance are of same in chemical nature. Chemical nature उनका same होना चाहिए या तो फिर वो one type of particles के हों. अब if we take the example, okay, let's take the example iron. Iron की कोई भी चीज हो, iron की एक nail है, वो किसकी बनी होगी? उसके क्या क्या components होंगे? Fe. तो ये कैसा पार्टिकल है? वन टाइप ऑफ पार्टिकल है ये. आयरन की नेल एक ही पार्टिकल से बनी हो, वो क्या है? आयरन. उसमें कुछ और नहीं मिक्स है. सिमिलरली सिल्वर इज देयर. सिल्वर किसका बना है? सिल्वर का ही बना हुआ है. सारे सिल्वर के कंपोनेंट्स हैं. ओके, तो इट इज अ प्योर सब्सटेंस. तो ये जो बात हो गई वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स की, जिसमें केवल एक तरीके के पार्टिकल्स हैं. अब क्या है? कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जो कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स के तो नहीं बने, बट दे आर प्योर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक शुगर, शुगर इज मेड अप ऑफ CHO. कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट शुगर, शुगर इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. But sugar is an example of a pure substance. Okay? Then why does it be called as a pure substance if it is made up of 1 to 3 particles and we are saying that it should be of 1 particle only? What happens? Sugar is a substance that contains one kind of pure matter and its composition is the same throughout. अब आप मार्केट से शुगर लाते हो तो उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है थ्रू आउट. ये जरूर बना है CHO का, लेकिन ये इसका जो रेशियो है इन शुगर के पार्टिकल्स में ये बिल्कुल सेम होगा. ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे कार्बन ज्यादा और किसी शुगर पार्टिकल में कार्बन ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में ऑक्सीजन ज्यादा है. नो, दैट इज नॉट देयर. सो शुगर इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस. Iron is also a pure substance. Silver is also a pure substance. As there are so many examples which we call as a pure substance. Now, if you want to see example of impure substance, I will be telling you how substance can be impure. So this was about the pure substance. Now we will see about mixtures or impure substance. Impure or a mixture. ओके, इम्प्योर भी कह सकते हो और मिक्सचर. इम्प्योर का मतलब ये हुआ कि कोई मिक्सचर है, कोई मिलावट है उसमें. अब वो कैसी मिलावट है केमिस्ट्री की नजर में आगे देखते हैं.
सब्सटेंस, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस के बने होते हैं मिक्सचर। जब वो कंबाइन करेंगे, बहुत सारे प्योर सब्सटेंस कंबाइन करेंगे तो दे फॉर्म अ मिक्सचर। ओके, एग्जांपल सी वाटर। ओके, ठीक है। Then comes there are many types of minerals that are impure or mixture is there. If we talk about seawater, there is salt also plus water is also there. So both are different type of components. It is made up of two types of components. If we talk about soil, you will see no, soil is not a mixture. Soil is pure. ये तो अर्थ का है, soil तो pure होगा. But no, chemistry doesn't consider soil as a pure. Why? Soil is made up of so many layers. ठीक है, ऊपर की लेयर ऑर्गेनिक लेयर है, उसके बाद और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं सॉइल की। तो सॉइल बहुत सारे कंपोनेंट्स का बनी हुई है। इट्स नॉट लाइक कि वो बस एक कंपोनेंट की बनी हुई है। कहीं पे सैंड होगा, कहीं पे कोई फर्टिलाइजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सो इट इज मेड अप ऑफ, soil is not a pure substance, it's a mixture. So all these were the examples of a mixture. Okay, I hope pure substance and impure substance or mixture is clear to you. Okay, so now we will focus on the types of mixture. So if we talk about the types of a mixture, mixture can be categorized into two main categories. Okay, mixture two types के हुए। एक तो आपका है homogeneous mixture, और दूसरा मिक्सचर क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, सो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब अगर हम होमोजेनस की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। द वन इज homo. What does homo means? Same. Okay, क्या चीज सेम होगी? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ओके, और अगर बात करें हेटेरोजेनस की तो हेटेरो का क्या मतलब हुआ? डिफरेंट। ओके, डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड होमो मींस सेम, hetero means different. Okay, so mixture are of two types, homogeneous mixture and a heterogeneous mixture. So we will be seeing what is homogeneous mixture. So a mixture which has a uniform composition. कैसा composition होगा? uniform composition, or you can say same type of composition. Which type of composition? Same type of composition or uniform composition throughout the solution. Okay, पूरे solution में एक जैसा composition होगा. For example, अगर suppose this is a homogeneous mixture, तो जो components होंगे वो इस तरीके से arrange होंगे. Okay, in a uniform way. It's not like some component is like that or some is running here, some is running there. No, it's a uniform. बहुत uniform दिख रहे हैं. It's a uniform composition. So homogeneous mixture में uniform composition होता है. जिस भी mixture
एग्जाम्पल तो इसके ऐसे हैं जो आप डेली अपने घर पे करते हो। यू डिजॉल्व शुगर इन वाटर, ओके, शुगर को डिजॉल्व करते हैं ना वाटर में, तो क्या होता है, आधा पानी में सपोज यू टेक अ ग्लास एंड यू पुट वाटर इन इट, ओके, दिस इज वाटर एंड देन पुट 2 स्पून्स ऑफ शुगर। So what is going to happen? The sugar is going to dissolve throughout the water. ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर का पानी मीठा है और नीचे का पानी नहीं मीठा है, या नीचे का मीठा है ऊपर का नहीं मीठा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। पूरा पानी एक टाइप का मीठा होगा। अगर ज्यादा मीठा है तो सारे ज्यादा मीठे हो जाएंगे पूरा पानी, और कम मीठा है तो भी पूरे पानी का एक ही टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का मीठा है नीचे का नहीं है, या समथिंग लाइक दैट, कि upper portion is tasting sweet and the lower one is not. No, it's not like that. The sugar is going to dissolve throughout the water, and that dissolvation is be uniform. पूरा uniform है। Sweetness का जो taste होगा वो uniform होगा, वो sugar पूरी तरीके से dissolve हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप डेली अपने घर में यूज मतलब देख सकते हो, आप करके भी देख सकते हो। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट डिजॉल्व 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन इट, यू विल फाइंड दैट दिस शुगर डिजॉल्व्स थ्रूआउट द वाटर इन अ यूनिफॉर्म मैनर। दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपने शुगर को लिया, सिमिलरली यू कैन डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, ओके। तो सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, वो भी वैसे ही डिजॉल्व हो जाएगा यूनिफॉर्मली थ्रूआउट द सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे सॉल्टी ज्यादा है वाटर, कहीं पे कम है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज गोइंग टू बी डिजॉल्व्ड इन यूनिफॉर्म वे। सो इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर सॉल्ट और वाटर का, ऐसा मिक्सचर शुगर और वाटर का जो कि होमोजेनस है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। अब बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर की। व्हाट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर? ओके, so this was for homogeneous. Now let's see for heterogeneous. Okay, अब heterogeneous mixture की बात करें तो heterogeneous mixture is such in which if we dissolve some components, it is not going to be dissolved uniformly. Okay, non-uniform composition. It is a non-uniform composition. Okay, non-uniform composition in the solution. किसी solution में composition कैसा है? Uniform नहीं है, एक जैसा नहीं है, same नहीं है, different है। Okay, अलग-अलग तरह का composition है, non-uniform है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? Such type of solution is called as heterogeneous solution. Okay, so अब इसका example if we take, suppose we mix salt and sulfur. Okay, let's take the example salt plus sulfur. तो क्या होगा? If you mix both of them, it is not going to be mixed uniformly. कहीं पे salt का presence ज्यादा होगा, कहीं पे sulfur. यहाँ पे salt ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे sulfur, और mix match uniformity नहीं होगी, uniform नहीं होगा. Okay? Similarly, oil and water. ये experiment भी आप अपने घर पे कर सकते हो. For this, what you have to do? Just take a water, put oil in it. तो क्या oil पूरा dissolve हो जाएगा water में? No, never. Oil is going to float on the surface
components are not in a uniform way. It's a non-uniform. Or this is the best example. You can see this at your home also. Just try it. Take a water, put some drops of oil. You will see that the oil is not going to dissolve in the water. Either it will float on the surface or it is not going to be uniform. So this was about homogeneous mixture and heterogeneous mixture. We have seen what is this and what are the examples of it. Now the question is very important from examination point of view also, the difference between homogeneous and heterogeneous. Although आपको यहाँ पे एकदम clear हो गया होगा कि क्या है, but we will see the difference also because in exams it is often asked about the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Okay? So let's see the difference between homogeneous and this side is a heterogeneous. Okay, as I have already told you, homogeneous. So the first difference is that they have a uniform composition throughout. Uniform composition. Okay, कैसा composition होगा? यूनिफॉर्म होगा. और heterogeneous का it will be non-uniform. Non-uniform composition. Okay. Now the second difference is that the component of a mixture can be separated through a physical process. अब आपके homogeneous जो mixture है, उनके जो components होंगे, उनको हम separate कर सकते हैं कैसे? किसी भी physical process के through. Okay? Components of mixture. Okay? Components of mixture can be separated, okay, by any physical process. किसी भी physical process से हम इसको separate कर सकते हैं. But अगर हम heterogeneous mixture की बात करें, okay, so we cannot separate through a physical process. Okay, so it can't be separated by a physical process. Okay, किसी physical process के through हम इसको separate नहीं कर सकते. Whereas this can be separated through any physical process. The third thing is that of homogeneous mixture, the components can't be seen. Components can't be seen by naked eye. Can't be seen by naked eye. Okay? जो homogeneous mixture के components अब होता क्या? जो homogeneous mixture के component है वो तो uniformly पूरा dissolve हो गया solution में. अगर आप sugar और water का जो solution है उसको देखेंगे तो क्या आपको sugar दिखता है naked eye से? No, you can't see. या salt और water का जो component है mixture है sorry, उसको आप naked eye से देख सकते हो? No, you can't see. वो तो salt कहाँ गया, sugar कहाँ गया, dissolve हो गया. You can't see it by naked eye. But a heterogeneous component को can be seen by naked eye. Okay? It can be seen by naked eye. And one more difference is there, which is that the mixture is a single phase throughout. Okay? Single phase है throughout. और यहाँ पे heterogeneous क्या है कि the substance can be two different phases and we may see separate layers
There can be two different phases. So this was the difference between homogeneous and heterogeneous. Please look through it carefully. It is very important from examination point of view. Uniform composition, non-uniform composition. Components of the mixture can be separated by a physical process. It can't be separated. It can be seen by a naked eye. It can be seen by a naked eye. Okay. So one thing I would like to tell you, components of mixture can't be separated by any physical process. क्योंकि आप sugar और it can be separated. Sorry, can be separated. I have written that one wrong. Very sorry for that. But components of mixture can't be. जब चीनी घुल गई water में तो क्या आप उस sugar को separate कर सकते हो? No. अब तो sugar dissolve हो गया. You can't separate it. So in case of homogeneous, we can't separate it. Composition of mixture can't be separated. But heterogeneous, it can be separated. Okay? And it can't be seen by naked eye. वही फंडा है, जब वो separate नहीं हो सकता, जब वो naked eye से भी नहीं दिखेगा. और इसमें single phase होगा, इसमें layers होंगे, more than 2 phases होंगे. Okay? So this was the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Okay? Now we shall be studying about solution. What is solution? Okay? So now we will study about solution. So what is solution? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance. Okay? Solution किसका बना है? Homogeneous mixture. अभी हमने homogeneous और heterogeneous mixture के बारे में पढ़ा. तो solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance. Okay? So solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance. For example, if we are going to take example of a solution, everybody must have drink lemonade. Okay? Lemonade आजकल के बच्चों में तो बहुत ही फेमस है, पिया होगा आपने. So what does it have? It has water plus sugar भी है, plus salt भी है. ओके, लेमोनेड में. तो अब क्या आप लेमोनेड पीते हो तो कहीं पे आपको बहुत खट्टा लगता है, कहीं पे बहुत मीठा? Is it like that? No, it's not like that. The solution of sugar, salt and water has been uniformly dissolved. मतलब ये sugar और salt जो है, ये दोनों water में बिल्कुल uniform तरीके से dissolved है. बिल्कुल एक taste आएगा पूरे glass में. Okay, it's not like कि कहीं पे ज़्यादा sugary होगा, कहीं पे salty होगा. So in a solution there is a, अब एक ही taste है, uniform है, तो means there is a homogeneity, homogeneous mixture है. Okay, homogeneity है इसकी at particle levels. Homogeneity at particle level, because all the particles are dissolved equally. Okay, they are dissolved in a uniform way throughout. Okay, so that's why this lemonade tastes same throughout. Okay, it is not going. This shows that the particles of sugar, the particles of salt are evenly distributed in the solution. Okay, और भी बहुत सारे example हैं like soda water. Soda water is also example. That is also homogeneous mixture. Homogeneity है solution में पूरे जितने भी homogeneous mixture हैं, they are uniformly distributed. Okay, so we can and one more thing I would like to tell you that this solution is further made has 2 types of components, and this solution can have a solute and a solvent. Okay, 2 components of solution are solvent
will be seeing about solute and solvent. Okay. So let's see what is solvent first. What is the solvent? So a component of a solution that dissolves the other component in it. Okay? कोई एक component है solution का. Solution तो आपको पता है solution में क्या है? Solvent भी है और solute भी है. लेकिन solvent क्या है? कि ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेगा. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट. ओके. सो यूजुअली द कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट. दे आर कॉल्ड एज सॉल्वेंट. ओके. कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, component of a solution that dissolves other component in it. Other component in it. Okay. Now the question is, what is solute? So solute is the component of a solution that is dissolved in the solvent. Solute get dissolved in the solvent. And it is usually present in less quantity. Okay. So it is the component of a solution that gets dissolved. Okay. ठीक है. That gets dissolved in a solution, in a solvent. you can say solvent अपने अंदर किसको dissolve कर लेगा? solute को. solute क्या है? जो कि solvent के अंदर जाके dissolve हो जाएगा. तो solvent जो है वो हमेशा large amount में होगा, large quantity में होगा. But if we talk about solute, it is going to be in less amount, or you can say it will be in less quantity. Okay. So this was about solvent and solute. We shall be studying about it in detail. Okay. So I will be telling you some examples of this solution. So if we talk about a solid into liquid, first type of solid in liquid. So we have a very common example for it. When we dissolve sugar in water, sugar को dissolve किया किसमें? water में. ठीक है. sugar को dissolve किया water में, तो ये liquid solution बन गया. ठीक है. sugar is dissolved in a water in a liquid solution. So what is this sugar? sugar is a solid और water क्या है? एक liquid. तो ये किस टाइप का solution बना है? solid in sugar, solid in liquid. sugar in water. sugar solid है और water liquid है. solid in liquid. Okay. तो ये एक solution बना. इसमें क्या होगा कि sugar solid है और sugar dissolve हो रहा है water में. तो sugar क्या हो गया? solute. और water sugar को dissolve कर रहा है अपने अंदर, और ये एक liquid है, तो ये क्या हो गया? solvent. ठीक है. I hope the definition of solution
तो जो फर्स्ट थिंग हुई फुलफिल वो ये क्या है, सॉलिड इन अ लिक्विड, आयोडीन डिसॉल्व्स इन अ अल्कोहल। तो चूंकि आयोडीन डिसॉल्व हो रही है तो आयोडीन इज गोइंग टू बी अ सॉल्यूट, और अल्कोहल जो है वो अपने अंदर आयोडीन को डिसॉल्व कर रहा है, तो अल्कोहल इज गोइंग टू बी अ सॉल्वेंट। So this was an example of solid and liquid. Now we will see an example of gas and liquid. Okay? What we are going to see? The second one is the gas and liquid. Okay? Let's see the example of a gas and liquid. So if we are going to talk about gas and liquid, so if we see the drinks like soda water, okay, soda water की बात करें, आप सब पिए होंगे soda water, तो what is soda? It's an example of gas and liquid because this soda is a gas and it contains a gas in it that is a carbon dioxide, and water is a liquid. Okay, water क्या है, liquid है, और water as a solvent behave करेगा। water क्या हो जाएगा, solvent हो जाएगा, क्योंकि ये अपने अंदर सोडा को डिसॉल्व कर रहा है, और सोडा आपका एक सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट। सो गैस इन अ लिक्विड, सोडा is a gas. Why it is a gas? Because it has a carbon dioxide in it. इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा ये सब पीने को मना किया जाता है। It's not good for health. Because what if we are taking soda, if we are taking cold drinks, what we are taking? We are
What is alloys? So alloys is a mixture of two or more metals or a metal and a non-metal, and that cannot be separated into their components by any physical method. So what we can say alloy is a mixture of two or more metals. Okay? Or it can be a mixture of metals and non-metals. Okay? And this alloys, they can't be separated. Okay? इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं into their components by any of the physical methods. Okay? So what happens कि although alloys is made up of metals and non-metals, but it is considered as a mixture. इसको किसकी कैटेगरी में रखा गया alloys को? Mixture की कैटेगरी में. Okay? Why is it being categorized in a category of a mixture? Because it has the properties of its constituents and have a variable composition. जैसे mixtures में composition vary करते हैं, बहुत सारे particles होते हैं, वैसे ही alloys में भी है. अब if we see the example of alloys, let's see. Brass is a very famous alloy. So let's see of which brass is made up of. Okay? अब brass की बात करें तो brass किसका बना है? Brass is made up of zinc. Okay? How much percent is zinc? 30%. Plus it is made up of copper. Copper is 70%. So you can see that copper and zinc both are metal. So metal plus metal का बना है. That's why brass is an alloy. As I have already told you, alloys are a mixture of metal and non-metal, so and on. But you can see that the composition of both the metals differ. Here the zinc is only 30%, whereas the copper is 70%. Similarly, another example is bronze. Okay? So these are the, one example is brass and other is bronze. So bronze is made up of, tin is there, again it is a metal. How many percent? 12% tin is there. And copper. Plus copper. So copper is 88%. Okay? So again you can see the composition of both the metals are different. Okay? So alloys are a mixture of two metals or more metals, or a mixture of metals and non-metals, and it is categorized as a mixture. Okay? And these are the examples, that is a brass and a bronze. Okay? So next we are going to see the properties of a solution. Solution की क्या properties होती हैं? Okay, let's see. Okay, तो सबसे पहली चीज क्या है? The most important thing that a solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous
homogeneous mixture. पूरा constituent same रहेगा. It's not heterogeneous. It's a homogeneous mixture. Second thing is that the particles of a solution are very small. Small particles का बना होता है. Okay? The particles of a solution is very small. It is as small as 1 nanometer. कितना small हो सकता है? Can you imagine 1 nanometer? What is nano? Nano itself is a very small unit. 1 nanometer मतलब क्या होगा? 10 to the power minus 9 meter. अब आप imagine कर सकते हो कि कितने small particles होंगे वो. Okay? क्योंकि वो 1 nanometer है. Nano तो itself बहुत ही small होता है. 10 to the power minus 9 meter. Okay? अब ये इतने small हैं these particles of a solution कि they can't be seen by a naked eye. Can't be seen by naked eye. Okay? ठीक है? Now the fourth thing is that since it is very small, it can't be seen by a naked eye. So what happens if a beam of light is passed through a particle of a solution? It does not allow it to pass. Okay, so because of its small size, because of the small size of a particle, they do not scatter a beam of light passing through the solution. ठीक है? Beam of light जो pass होगी solution किसी भी solution के वो scatter नहीं होगी since they are very small in size. So the path of light is not visible. Okay? Beam of light का क्या मतलब हुआ? Light के पूरे bunch, okay? Bundles में light आ रही है, but it is not visible in a solution. Solution के case में वो visible नहीं होगी क्योंकि particles जो होते हैं solution के वो बहुत ही small in size होते हैं. आप तो देख सकते हो 1 nanometer है तो कितनी छोटी यूनिट है ये. Now the other thing is that these solute particles, okay, solution में क्या है? Solute है और solvent दोनों है. तो जो solute particles है आप उसको separate नहीं कर सकते हो. Okay, solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Okay, solute particles can't be separated by filtration. Okay, by a method called filtration, because these solute particles also they do not settle down when left undisturbed. Like अगर आप कोई solution बनाए और उसमें जो solute particles हैं वो पूरा uniformly dissolve हो गया. It is not like that if you leave it and you do not disturb that it is going to settle down. No, it is not going to settle down because the solution is stable. वो already बन चुका है. जब आप sugar को डाले water में तो वो पूरा mix हो गया uniform तरीके से. ऐसा नहीं है कि आप sugar और water के solution को अगर छोड़ देंगे तो बाद में sugar settle down हो जाएगा. No, it's not like that. Okay, so this was the properties of the solution. Okay, so I am stopping my first part here only. This was the first part 1 of matter. Is matter around us pure? There is lot to study in this. In my next lecture I will be telling you about the types of solution, or you can say the concentration of solution, how much concentrated a solution can be, and there are many things. Suspension is there, colloid is there. There are many things we are going to study. So this was all for today in Is Matter Around Us Pure? So thank you so much. Thank you for watching my video, and if you like it, please give a like button, and if you have not subscribed our channel yet, please do subscribe it so that you can get the daily updates of the chapters which are totally covered topic wise. If you are going to see this, you will see that it is totally covered according to the NCERT syllabus. It is fully according to the syllabus. No irrelevant things are there. So please do subscribe it so that you can get a good videos. Okay, and this Poly Scholar has also launched its app. Just go on it, download it. It's with the name
teacher. Okay, so thank you so much. Thank you for today.